Now I would like to call on the dais, one of my favorites, whenever we go anywhere, Sir follows us. It's an absolute honor to welcome Mr. Siddharth Rajgarya ji, who's the Chief Learner and Director, DPS Varanasi, Nasik, Nagpur, Lava, and Pune. Can we have a huge round of applause? One of the biggest brands of schools in India today, DPS. Can we have a louder round of applause, everyone? So I'm glad to be here, but I'm starting with a question. थोड़ा इंग्लिश हिंदी यूज़ करेंगे. आज सुबह आपने जब रेडी हो रहे थे तो आपने मिरर में देखा होगा. And when you looked into the mirror, what did you see? Did you see some hairline declining? Did you see a little bit of, because all that's happening for me, some tummy coming out? This is not aging. This is actually drift. धीरे धीरे हर एक दिन थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट हो रहा है. जहां आपको चाहिए और जहां आप पहुंच रहे हो वो थोड़ा थोड़ा हर एक दिन ड्रिफ्ट हो रहा है, right? So when you look into the mirror, आप क्या देखते हो? क्या दिखता है आपको? You actually see a symptom, right? When you look into the mirror every day, you look at a symptom. You look at something that, their hair color is changing. That's a symptom. वजन बढ़ रहा है. That's a symptom. Not able to get down the stairs. There's a little pain in the knee, right? That's a symptom. All of these, ये सारे symptoms हैं. But when you go on, get a test done, that is when you get a lot of numbers. और जब आपको ये numbers मिलते हैं और उन numbers को लेकर के आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, वो डायग्नोस करता है. डॉक्टर जब डायग्नोस करता है, that is when he or she is able to limit. जब 10 रीजन्स हो सकते हैं, उससे वो एक या दो रीजन पे आता है कि ये दो पॉसिबल रीजन्स होंगे फॉर यू टू बी फीलिंग दैट symptom, right? And that is when the doctor is able to make a intervention. कुछ ऐसी दवाई देता है जिसके कारण you are able to then further feel better. अगर डॉक्टर ने इमीडिएटली ये सिम्टम के ऊपर दवाई दे दी तो क्या पॉसिबिलिटीज है? सही होगा, गलत होगा, दोनों, कुछ भी हो सकता है. there's a lot of chance, right? Unless and until it's a very very seasoned guy. Yeah? एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्चर है and one of my favorites, Peter Senge. He's written this beautiful book called The Fifth Discipline. If you are a school principal in the audience and if you have not read The Fifth Discipline, you must read that. Anybody leading an edtech company must read that, right? It's a brilliant book. It talks to you about systems. जो पवन जी ने हमें बताया कैसे सिस्टम बनाने हैं, कैसे सप्लाई चेन बनाना है, right? It's all about the theory. पवन जी ने उसको एक्सपीरियंस के थ्रू जाना, उसको किया. डब्बा वाला ने उसको एक्सपीरियंस के थ्रू किया. And it is about a lot of research, right? And what it tells you in our schools today, हमारे स्कूलों में कुछ प्रॉब्लम होती है, बोर्ड रिजल्ट्स कम आए, हम इमीडिएटली ट्यूशन चालू कर देते हैं. बच्चों को बोलते हैं ट्यूशन जाओ, या हम एडिशनल रेमीडिएशन चालू कर देते हैं. व्हाट ही टेल्स डॉक्टर पीटर सिंगे इज, कोई भी सिम्टम हुआ हम फास्ट विजिबली एक सिम्टोमैटिक फिक्स कर देते हैं. बोर्ड रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, इमीडिएटली वी विल से कि चलो ट्यूशन लगा देते हैं बच्चे का. बट एक्चुअल प्रॉब्लम कुछ और है, क्योंकि कॉज कुछ और है और हम वो फंडामेंटल फिक्स करते नहीं. सो अगर आपको कोई हेडेक हो रहा है या कुछ हो रहा है, आपने इमीडिएटली पेन किलर ले लिया, यू आर एक्चुअली एड्रेसिंग जस्ट द सिम्टम. और वो बार बार होगा तो आपको लगेगा कि पेन किलर से अगर काम हो रहा है, आप रूट कॉज तक कभी पहुंचोगे ही नहीं, राइट? एंड a lot of this, you see this board results dip,
more coaching, more tests. Teachers were never taught कि actual learning, बच्चे actually सीखते कैसे हैं? How does that happen? Parent complain rise हो रहे हैं, हम ज़्यादा meeting कर रहे हैं, ज़्यादा communication कर रहे हैं, but the school never has a specific designed space for parent relationships. Teacher attrition है, we are rising salaries, but there is no, a teacher in the school never feels that, I am growing every day in this school. Because if a teacher feels that, small salary differences will actually not make any change happen. How many of you know the answer to 1.01 to the power of 365? Anybody in the audience? Any maths people? 1.01 to the power of 365. Can you describe this statement in words? इसका मतलब क्या है words में? Yes? 1% every day. Yes, 365 is the number of days in a year. And 1.01 is 1% every day. So maths tells us कि अगर हम 1% दिन में बेहतर होने का ठान ले तो हम साल के एंड में 37 गुना बेहतर हो सकते हैं. So to put this in perspective, अगर आपने 1st of January को ये सोचा कि I will become 1% better every day और आप 1st of January में ये थे तो 31st December में you will be 37 times bigger than this, 37 into this. That is the power of compounding. That is the power of mathematics. And अगर आप 1% every day decline कर रहे हो, अगर आप 1% every day decline कर रहे हो, so the compounding is even faster. Right? So अगर आपका hairline थोड़ा recede कर रहा है तो वो compounding ज़्यादा जल्दी होने वाला है, आपको पता भी नहीं चलेगा जब थोड़े यहाँ के भी गायब हो जाएंगे. And you'll have to go to Traya. Right? So, but in a lot of situations, especially if you're a school leader, especially if you're leading an organization, कुछ ऐसा इवेंट होता है और हम इमीडिएटली एक सिम्टोमैटिक फिक्स लगा देते हैं. वी इमीडिएटली रिजॉर्ट टू अ पेन किलर, राइट? और जैसे ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेन किलर खाने की आदत हो जाती है, वी डोंट रियली अंडरस्टैंड कि एक्चुअल रूट कॉज क्या है, एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है. एंड दिस हैपेंस स्पेशली इन स्कूल्स बिकॉज आपको पता ही नहीं चलता कि वो जो छोटा 1% इंप्रूवमेंट है वो इतना छोटा होता है, इतना स्लो होता है, दैट you never want to go to that, and you want to be able to answer to parents, you want to be able to talk to your board member, and उसके कारण आप immediately remediation और इन सब चीज़ों में immediate fixes, symptomatic fixes में जाते हो. and slowly it is like आपको एक प्रॉब्लम है, आपने पेन किलर खाया, उस समय immediate address हो गया, बट धीरे धीरे जो रूट कॉज है उससे आप धीरे धीरे ज़्यादा दूर जा रहे हो. एक समय ऐसा आएगा कि आपको रूट कॉज समझ में ही नहीं आएगा, बिकॉज पेन किलर्स भी काम करना बंद कर देंगे और आपको रूट कॉज समझ में ही नहीं आएगा कि हुआ क्या, बिकॉज you've actually lost the capability of finding a root cause. So what I'm giving you today, and this is gold for any school leader, right? What I'm giving you today is a way of finding a root cause in your institute, in your company, and a clear protocol. जब आप एक मिरर देखते हो और अपना वजन देखते हो, this is exactly what's going on in your mind, right? And it exactly what should go on in your mind. So name the symptom. क्या देखा आपने? The next time, the next month or Monday morning, name this symptom what you are seeing in your school. Name what you did about it last time. Last time आपने इसके बारे में क्या किया? You should write that down. It shouldn't be just here because हर बार वो बदल जाएगा अगर यहाँ पर होगा तो, right? So write that down.
this is the most powerful piece, and 99% of the people in this room wouldn't do it, or 99% of school owners or school principals or leaders avoid doing this. Ask why until you leave your own authority. बहुत बार प्रॉब्लम आप होते हो, and the way you are seeing things is the problem, right? So you try and ask a lot of times. I know I've done this with a lot of school principals, I've done this with a lot of school systems, and what I've understood कि बहुत बार क्योंकि हम ऐसे ही करते आ रहे हैं, like I know of a school जहाँ पर कि every admission would meet the principal, and that was a bottleneck, और उसके कारण स्कूल के admissions नहीं बढ़ रहे थे because they would have a certain time और उसी window में सबको आना है, and it wasn't happening, right? So a lot of times that is the challenge. I know my time's up, so I'll move a little bit faster. Ask what is the 1% fix of that week, and next month you do not re-diagnose it, but you actually just sit down and see कि वो 1% हुआ कि नहीं हुआ. हम अपने बच्चों को बार बार बोलते हैं कि आप रिफ्लेक्ट करो, एक एग्जाम हुआ, सोचो कि क्या अच्छा हुआ क्या खराब हुआ, right? What did you learn in this school year? But do we actually do that? Do we actually do that for our school? क्या स्कूल हर महीने बैठ करके सोचता है कि इस महीने एज अ स्कूल हमने क्या सीखा, इस महीने ऐसा क्या था, what did we fix, which system did we fix, right? Which symptom did we fix, what will we do differently tomorrow, right? Do we do that? I'm leaving you with the protocol, and this is the mirror protocol. You can scan and get that, and that is a very quick assessment for your school system. This a reflection as a habit, आपको every day as a leader, as a habit अगर आप reflect करोगे कि आज मैंने क्या किया, आज मैं कैसे बेहतर हो सकता हूँ, a school reflecting on a regular basis will become 1% better every day. And if you become 1% better every day, by the end of the year, by the end of 2 years, you would have grown by leaps and bounds. And जो मंथा सर बोल रहे थे, जो पवन सर ने बोला, this is the how of actually doing that. So much of technology coming in, but if you diagnose your system, you will be able to blend in the right technology at the right place to achieve that growth. But that root cause analysis is the most important piece for any school system. Jai Hind, thank you.